So after Taare Zameen Par, everybody told me, "Ma'am, there's a fantastic script. It's a story of a child. वो बच्चा थोड़ा बीमार है, माँ का रोल है." I'm like, bye. So there was one guy who told me that you should look like the heroine, and that was great advice. क्यों नहीं? Doesn't mean that if you're stylish and fashionable कि आपके morals बिल्कुल 10 फीट धरती के नीचे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. Hi, my name is Tisca Chopra and you're watching me on Hauterrfly. My journey has been exciting, scintillating, a bit like the Lord of the Rings, where there's lots of obstacles and hurdles, but there's a few hobbits to jolly it along. I think मेरे लिए हमेशा creativity has been more important than commerce. I don't think I've been trolled too much because I'm no filter Tisca. मेरे को जो लगता है मैं वैसा ही बोल देती हूँ और अगर गलती हुई I have no problem saying sorry. The whole industry has changed so dramatically in the past several years. When I first came into the business, हर कोई इस नंबर से जाता था कि कितनी फिल्में कर रहा है एक एक्टर. People would take a lot of pride in saying हम 20 फिल्में कर रहे हैं, हम 25 फिल्में कर रहे हैं, because that was seen as a measure of your success, the number of films you were doing. But I think some actors, Amir and others, brought in a change जहाँ पे they started doing one film at a time. Female actors का, like my first couple of films, the director narrated the script to me and he said, "Madam, आपके 4 गाने हैं?" क्या मैम, गाने हैं, गाने तो चलते हैं ये. So I said, "Yeah, I understand, but anyone can do be replaceable in songs." I think performance is something that आज it's the best possible time. क्यों आते हैं ऐसे ख्याल? बार-बार कोशिश किए, बार-बार मौके मिले, पर कोशिश को भी किस्मत की जरूरत पड़ती है. शायद किसी और जहां में मुकम्मल हो जाऊंगी. The purpose of my life as an entertainer is I love to tell stories. That is the ultimate and only reason for me to be an actor. I love acting and I love writing. I love producing, directing, acting. I love telling stories to people. वो मेरा मतलब I want to jump out of bed in the morning and I want to do that. So if the audience is not liking the story, then आपकी wishes सर आंखों पर. आपको कहानी नहीं जम रही है, हम बनाइए आपके ले रहे हैं. आपकी जो मर्जी है आप बोल सकते हैं because you are the consumer. ऑडियंस को एक अच्छी कहानी चाहिए, चाहे वो सारांश हो या अर्थ हो या whichever films. अगर कहानी अच्छी है, आपकी मायने वाली कहानी है, वो बीच में फॉर्मूलेक सिस्टम में आके कि नहीं जी ये यूथ प्रधान है और यही चलेगा और वही चलेगा. आई थिंक वी आर कमिंग बैक टू एन इंडियन रूटेडनेस. एक हमारी जो जड़ों से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं वो अब निकल के आ रही हैं और कोई भी 85-year-old कैन बी द प्रोटैगनिस्ट. इट डजंट रियली मैटर. इन 2016 मैंने खुद एक शॉर्ट फिल्म लिखी और प्रोड्यूस की जिसका नाम था चटनी, विच बिकेम द मोस्ट वॉच शॉर्ट फिल्म इन द वर्ल्ड. और इसी के अगेंस्ट था कि ये जो ट्रेडिशन है कि यंग और गुड लुकिंग, वो महिला ना यंग है, वनीता करके उनका नाम है, ना यंग है ना गुड लुकिंग है, पर इट बिकेम द मोस्ट वॉच शॉर्ट फिल्म इन द वर्ल्ड. कहानी चलनी चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए. After Taare Zameen Par, everybody told me, "Ma'am, there's a fantastic script. It's a story of a child. वो बच्चा थोड़ा बीमार है, माँ का रोल है." I'm like, bye, ciao, see you later. मैं नहीं कर रही. Then I did दिल तो बच्चा है जी, which was a complete turnaround from that. आप किसी सिंगर को बोलो कि आप एक सुर में, एक राग में एक ही गाना गाते जाओ, वो तो बोरियत से वहीं गिर जाएंगे. तो एक्टर का भी वही हाल है यार. यू कांट टेल देम कि बी अ वन ट्रिक पोनी कि आप एक ही चीज़ करते जाओ. सो आई गेस यू हैव टू हैव द गट्स. ऑफ कोर्स मेरा बैंक बैलेंस उसकी वजह से काफ़ी कम है कंपेयर टू व्हाट इट कुड हैव बीन, बिकॉज इफ यू फॉलो द टाइपकास्ट प्रोसेस देन यू कैन छापो, देन यू कैन पुट कॉमर्स फर्स्ट एंड क्रिएटिविटी पीछे, बट आई कांट वर्क लाइक दैट. So there was one guy who told me that you should look like the heroine,
एंड दैट वाज ग्रेट एडवाइस, क्यों नहीं. अब वो सिंप्लिसिटी अपने आदर्श ऊपर रखिए और एकदम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला, इट्स नॉट द टाइम फॉर इट. People are wanting to look their very best and I'm all for it. Please, doesn't mean that if you're stylish and fashionable कि आपके morals बिल्कुल 10 feet धरती के नीचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. You can be very ethical, very moral and very fashionable and trendy and into cool things. So I think that advice is valid. I've always been quite a straight shooter. मैं जो बोलती हूँ मेरे मुंह पे दिखता है और सीधा बाहर निकलता है. आई एम लाइक नो फिल्टर तिस्का. आई डू नॉट हैव बैरियर्स. आई डोंट थिंक टू मेनी पीपल हैड द गट्स टू टॉक टू मी लाइक दैट. एक दो ने जब बोला तो आई वुड रिटर्न इट टू देम विद अ कमेंट लाइक डिनर तो मैं खाती नहीं. आई एम यू नो, लेट्स टॉक अबाउट दिस इन योर ऑफिस और अदरवाइज लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. But I have of course seen the film industry come from a place जैसे कि one night in a hotel my hairdresser came running to my room and she knocked on my door. She's like, ma'am darwaza kholiye please, please, please. So I was fast asleep. I opened the door and she was like, you know, so and so person is kind of really troubling me and I don't know where to go and so you come and you sleep in my room. Nobody will dare to come here. So you know, it is not just actors but also like any woman working within the film industry back in the day. But आज की तारीख में I don't think किसी की ऐसी हिम्मत है कि वो इस तरह से करे. And I don't even think that the kind of people who are coming into the film business, like the guys I meet, they're wonderful. They're so gentlemanly and warm and wonderful and caring. I have always believed that जिसको excuse बनाना है वो नेपोटिज्म को वो बोलेगा ये नहीं वर्क करता, वो नहीं वर्क करता, ये नहीं है, वो नहीं है. If you look at the biggest stars that our country has, say a Shah Rukh Khan, say an Akshay Kumar, today a Kartik Aaryan, Taapsee, Bhumi, where are all of these people coming from any sort of background? Ultimately, and I believe this with my whole heart, if you have in that darkened movie hall, अगर आपने किसी के दिल के अंदर जाके उनके दिल को छू लिया है, हंसा दिया, रुला दिया, रिझा दिया, बहला दिया किसी भी तरह से, then there is no limit to your growth. The biggest thing I feel is that women should not become women's enemies. पहले क्या होता था, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था कि एक फैमिली का हेड था जो मेल था, वो पैसे कमाता था और वही पैसे और वो रिसोर्सेज वो ट्रिकल डाउन टू एवरीबॉडी. तो हर औरत और आदमी कोशिश करता था कि एक दूसरे को नीचे दबा के आगे पहुँचे ताकि इस सोर्स ऑफ इनकम या इस सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंस से या इस सोर्स ऑफ पावर से हमें पावर मिले. बट आज की डेट में विमेन आर नॉट मून्स, दे आर किसी सन की लाइट नहीं लेती हैं. दे आर देमसेल्व्स द सन, दे आर अर्निंग, दे आर केपेबल, दे आर एम्पावर्ड. तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है टू पुल अदर पीपल डाउन. I think high heels is sexy. I'm as old as the hills, as old as the mountains, as old as the sky. I'm an old soul. But in terms of my energy, I'm called Duracell by all my team because they feel that इनके बैटरी कभी ख़त्म नहीं होते हैं. I kiss and a huggy from my daughter, completely. Either Himachal in India or Italy. To win an Oscar and to see a couple of places which I'm really keen on, like lie in the Dead Sea, go to Machu Picchu, at least go to the base camp of Mount Everest. Leap and the net will appear. I want to do a love story, I want to do an out-and-out comedy, I want to do a travel film, I want to do something as like an adventure film, like a deep sea diving or something like that. So much. I want to play a truck driver, I want to play a drug addict, I want to play a spy. My God, I can go on. What's not to love? I love everything about being a woman. Oh my God, anything that gets you moving, rocking and a rolling, everything.
You're watching Hautesteppers, and if you like this video, you know the drill. Share, like, subscribe my Instagram page. And of course, Hauterrfly. Mwah.